I think this is a session that everybody has been looking forward to. The Jaipur advantage. You know, Jaipur isn't just a city, it's a legacy, a celebration of art, culture, and beautiful craftsmanship. And today, we have a powerhouse of a panel, the absolute cream of Jaipur's jewelry world. Here to discuss what makes this city the unrivaled jewelry hub of India. Joining us for this fascinating discussion are some of the Jaipur's finest. May I please welcome Mr. Chandra Surana from Bhuramal Rajmal Surana onto the stage, please. May I also invite Ms. Sunita Shekhawat from Sunita Shekhawat. May I invite Mr. Yash Agarwal from Bidhichand Gancham Das. Tarang Arora from Amrapali and Anju Jain from Exquisite Fine Jewelry. To moderate this discussion, may I please invite Mr. Ajay Kala, Joint Secretary, Jaipur Jewelry Show. Over to you, Mr. Kala. नमस्कार। कल इसी हॉल में जो कोठारी साहब ने अपने उद्गार व्यक्त किए थे और राजीव जी ने इंटरव्यू लिया था, उसमें हॉल पूरा भरा हुआ था। हमें उम्मीद है कि आज भी पैनल हमारा बड़ा पावरफुल है और कुछ देर में पूरा हॉल भर जाएगा, क्योंकि जिससे साउंड एको नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है उसका फ़ायदा कि लोग जब होते हैं तो साउंड एको नहीं होती है। वंस अगेन वेलकम टू एवरीवन। आप हमारा पैनल देख सकते हैं। चंदू सुराना जी मेरे पास बैठे हुए हैं। इनका नाम चंदर सुराना जी है, पर हम लोग इतने सालों से जानते हैं कि हम इनको चंदू जी बोलते हैं। प्लीज वेलकम चंदू सुराना जी, हु इज फ्रॉम पूरामल राजमल सुराना। एंड टू माई राइट इज, you know him, Yash Agrawal from Bidhichand Gancham Das Jewelers. And extreme right is Sunita ji Shekhawat. That is left, sorry. Sunita ji Shekhawat from Sunita Shekhawat. And Tarang Arora is here from Amrapali. He is such a known face, and because they are getting so many awards and he is the only man going on the stage. And Anju Jain, she is doing fine jewelry and has got many outlets out of India, visiting not less than 14 times to 16 times in various shows. So please welcome the entire panel. They are complete in themselves. They represent Jaipur. Wherever they are, you can feel that Jaipur has got a great representation. I am going to ask few questions individually, and one question is going to be common to all. That's the first question. The question is, what's one thing about Jaipur that you hold close to your heart, something that always inspires you? जयपुर की क्या खास खूबी है जो आपको हमेशा इंस्पायर करती है? And we can start with Check. चंदर जी से, please. नमस्कार, थैंक यू JJS फॉर हैविंग मी हियर। जयपुर में क्या नहीं है? जयपुर इज जयपुर, जयपुर मीन्स जय, एंड जयपुर इट हैज़ गॉट जॉय। सो द प्लेजर ऑफ वर्क, द प्लेजर ऑफ बीइंग हियर, एंड इट हैज़ द हिस्ट्री, इट हैज़ द tradition of encouraging the artistry, the royalty who had taste here. We are geographically so well situated with the rural connect to the urban. So nothing is less here to be competent. And in about 50 years, 60 years back, when people moved from here to international borders, they brought in a lot of knowledge and other things to Jaipur. So today we stand at almost a world-class kind of knowledge and system to be, and that's what Jaipur is all about. And if you're asking me what is the thing which is close to your heart, I'm back here in Jaipur after 2.5, 3 years, after spending 35 years in Calcutta, where I went to reach to the clients. We did our first show there, and people had to wait on the street to get into that show, established by my uncle and other people, and we kept on going. So this closeness is there, and Jaipur has everything what I can narrate. Thank you. Thank you, Chandu ji.
और आपने जो बातें बताई है उससे बहुत सा मैटर कवर हो गया. मैं समझता हूँ आगे के स्पीकर्स को जरूर दिक्कत आ सकती है, पर अंजू जी इज देयर. Good morning, everyone. Good afternoon. I'm very happy to be part of the esteemed panel. जैसे चंदू भैया ने काफ़ी खूबियाँ जयपुर की ऑलरेडी गिना चुके हैं, for the heritage, the history, the legacy, the climate. But I think Jaipur, what really makes Jaipur is the people, the hospitality and the warmth. The Jaipur वाले को आप दुनिया में कहीं भी मिल लें. Once that Jaipur connect is established, I think that connect never leaves. So Jaipur is really special, and Jaipur has truly made a world mark in terms of jewelry, gemstone cutting. Even internationally, when you say that you come from Jaipur, people know Jaipur. They know Mumbai for diamonds, but the people know Jaipur for the kind of creativity and the cohesive atmosphere it brings. सिर्फ jewelry के लिए नहीं, सिर्फ कपड़ा, block print. We've had international designers collaborate with Jaipur designers. Settled international designers who are settled in Jaipur, doing their own thing and making a mark. So Jaipur, I think the environment is great and it's a very welcoming city for everyone. What inspires me about Jaipur, architecture और सब कुछ तो हम बचपन से देखते हुए आए हैं, and I think that all grows on us and it reflects in all our jewelry. But I think nowadays what really inspires me are the bazaars of Jaipur. कुछ भी लैगिंग हो तो एक चक्कर आप जौहरी बाजार का लगा लें. द इंटरेस्टिंग साइट्स, द कलर्स, द मिक्स ऑफ रेड एंड पिंक एंड लहरिया, और वो कचौड़ी की खुशबू और वो मटर की फलियाँ. आई थिंक दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर नो सिटी गिव्स, एंड इट रियली क्रिएटिवली स्टिमुलेट्स एनीबडी हु हैज़ आई थिंक दे ऑल एग्री, जो लोग भी पैनल पे हैं, दैट जयपुर हैज़ द इफेक्ट ऑन ऑल ऑफ अस. सो या, दैट्स इट. थैंक यू अंजू जी. नाउ सुनीता जी प्लीज. Hello, Namaste everyone, Kamagani, Jaipur. Jaipur is in my heart. Although I was not born and raised in Jaipur, but since the time I've got married and moved to Jaipur, Jaipur is my identity. Jaipur is my heart, my soul, everything. Whatever I am today is all because of the city. बहुत सारे पर्सनैलिटी के जो आस्पेक्ट्स हैं, बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम अ ज्वेलरी बैकग्राउंड. मुझे लगता है मेरे को आज तक जो मिला है वो इस शहर ने ही दिया है. सो व्हेन आई डिड माय फर्स्ट एग्जीबिशन इन बॉम्बे, दिस वाज आई थिंक बिगनिंग ऑफ आई थिंक 2005 or 7. So this was first event, my private solo event in JW Marriott, and Bombay Times asked me a question that what is that you're bringing into Bombay. I said, Bombay has all the glitter, glamour, but when it comes to color, Jaipur adds all the colors to the existing, stone. So that was my first interview. And Rajmata Gayatri Devi, she's a great, great influence on my personality, my work, everything. So when she came in 1999, after I did my gemology from Gem Testing Laboratory, so she, I just wanted to present her a small token of love, which I was very sure that she will not accept. But then, somebody very close to her told me that Sunita, she's very fascinated with letter J. Maharaja Jai Singh, her son Jagat, and Jaipur. तो मैंने उनके लिए एक J लेटर का छोटा सा एक पेंडेंट बना के दिया था. And I wrote a beautiful poem. तो उन्होंने बोला कि मैं मतलब I wouldn't have accepted, Sunita, any gift from a girl, young girl who's just trying to establish herself. But since it's a J letter, so कुछ चीज़ें होती. And then the first check that she signed was Maharani Gayatri Devi of Jaipur. Hence the idea came that Sunita Shekhawat without the identity of Jaipur is nobody. So कुछ historical हैं, कुछ personal हैं, कुछ professional हैं. And I think I'm very fortunate to be in this city, and whatever I am today, I owe everything to this city. Yeah. Thank you so much. Thank you, Sunita ji, and we are feeling, Jay, that you are so close to Rajmata ji. And now Yash is here. गुड आफ्टरनून. सबने ना जयपुर की इतनी तारीफ कर दी है कि मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है. पर क्या है कि लंच टाइम चल रहा था और राजीव अंकल जा रहे थे और आज लंच पे भी नहीं लेके गए, तो मुझे जयपुर की जलेबी और कचौड़ी बहुत याद आ रही है. So actually, that is very important thing, but that's really inspires me how the Jaipur food is most important. आप JJS में आते हो, and everybody over here is saying, not talking about jewelry, is that JJS का खाना बहुत अच्छा होता है. That's one of the most important things. So
I mean, it's not about the food, it's not about the street, it is whole Jaipur which inspires us. किसी ने मुझे सही कहा था ये ना, you can take a Jaipur boy out of Jaipur but not Jaipur out of a boy, Jaipur boy. So that is what is there in me. Like जब जयपुर की बात होती है ना, there's a glow in my eye. And that is what the actual inspiration is. And that's what actually my brand all stands about. We are a Jaipur brand, and that's why we always say the Birdi Chand from Jaipur and Birdi Chand Jaipur. Thank you. Now, Tarang is there. Good afternoon, everyone. Thank you, JJS, for having me here. I think definitely what both of them said about Jaipur having that in their brand name, I think that is something which we all foster on, we all are very excited about, and that's what we are taking to the world. But for me, why Jaipur is special and what it holds for me is the inception of Jaipur, which was 1726. It was built with the mindset to have the best craftsmen in Jaipur. Tax breaks were given to get those people to Jaipur. We have Moti Dungri, we have Jori Bazaar, we have Ghat Gate, जहाँ पे घाट बनता है emerald का. We have Manak Chowk. Yes. Of course, Uncle had to remind me of the ruby part of it also. So I think these stories, the idea which was inception of Jaipur was the budding seed of what we have in Jaipur today, the artistry of Jaipur, the craftsmen of Jaipur, the karigars of Jaipur. And I think, yes, Jaipur is not complete without brands and without designers, but it is not complete at all without the craftsmen, without the artisans, on which, because of which we are sitting here, we are who we are, is because of the craftsmen. So I think that is the essence of Jaipur. As long as we take them together and we keep that strong, I think Jaipur will go ahead and many centuries to come. Thank you. Thank you. You have the different points. And now I ask the first question to Chandraji Surana. He is from Buramal Rajmal Surana. Your brand is deeply rooted in royal and aristocratic patronage. How do you maintain this legacy in today's competitive and democratized jewelry market? Before he starts, I tell you, democratization of diamonds was one term being used since like 25 years, and India is being credited for it. हमने डायमंड का प्रजातंत्रीकरण कर दिया है और 16 में से 15 डायमंड इंडिया में कट किए जाते हैं. तो दैट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी, डेमोक्रेटाइजिंग ज्वेलरी. नाउ इज चंद्र जी. Very, very important question, something which needs deep thought, how all this aristocratic patronage can be maintained and the legacy carried forward. With so much happening on the platter, with not having just quality, but fighting the budget of the customer. And when you need to do things which your client is wanting available in much lesser price, this is a challenge. The most important aspect I feel in this thing is to have other people do their task the way they want to do, but you maintain your quality, your standard of things without compromising on what you think is the best. And that is what keeps the brand standing and continuing. And this is what we have learned from our elder generation who have worked so hard to do it. In spite of all the challenges of moving fast, we don't want to get into it, but maintain that quality which a very selective customer needs. I hope I'm answering the question. चंद्र जी, आप चूंकि इसमें हमने सेकेंडरीज तो नहीं रखे हैं, पर चूंकि आप बरसों तक फिल्म स्टार्स को भी ज्वेलरी सप्लाई करते रहे हैं, एनीथिंग इंटरेस्टिंग ऑन दैट? नहीं, फिल्म स्टार्स की चॉइस उनके तरीके की होती है, पर जब उनको कोई इन्वेस्टमेंट की या लॉन्ग टर्म होल्डिंग की चीज़ चाहिए रहती है, वो फिर उस तरह की चीज़ को देखते हैं. और हमने कभी भी अपने क्लाइंट्स में फिल्म स्टार्स को एम्फसाइज नहीं किया, क्योंकि टेस्टफुल लोगों का नज़रिया अलग होता है और ग्लैमरस वर्ल्ड का नज़रिया अलग होता है. इसको कभी जोड़ा नहीं. ओके, थैंक यू सो मच. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. बिरदी चंद घनश्याम दास से यश जी हमारे बीच मौजूद हैं और वो अपनी बात बता चुके हैं. बिरदी चंद डिजाइन्स ऑफन ब्रिंग ट्रेडिशनल मोटिव्स टू लाइफ विद ए मॉडर्न ट्विस्ट. व्हाट ड्राइव्स your design philosophy when reimagining Jaipur's visual heritage for today's market? How do you look at that? Okay. So, I mean, it's a very interesting question as he asked that what inspires you about Jaipur.
and I said that Jaipur completely inspires me. So when I design, there are things which comes in my mind when Jaipur is resonated to it. So internationally, when I was working and I was studying out over there, I realized that our motifs are still very traditional. So how do we change our aesthetics so that it can go into a wider spread market and the modern people can resonate and understand these things more closely out. तो हमने क्या सोचा? हमने सोचा कि we have to narrate the stories out over the motifs. I have to do the things around that. We started enrooting ourselves closer to the culture in Jaipur. Then there was a friend of mine who said that, what's your story and what are you going to present out? There are Italians who bring the Italian jewelry and they said they are Italian jewelers. Then you are an Indian jeweler, but India is very vast. But then I realized that जितनी भी डिज़ाइन है या तो इंडियन है और या फिर जयपुर है. That was the turning point in my life, that I made myself so close to Jaipur that I started having the motifs out from here itself and started presenting in a different silhouette to the world. यश जो बता रहे हैं, बीजी के जो डिजाइन्स है, बीजी नोन फॉर स्टोरी टेलिंग. परचांस बीजी के और जेजेएस के जो क्रिएटिव डिजाइनर हैं वो सेम हैं. वो एट टाइम्स ये बात कहते हैं कि जो स्टोरी टेलिंग के लिए बीजी की स्टाइल है वो किसी की नहीं है. एंड आई फील दे शुड बी अप्रिशिएटेड. राज्यवर्धन सिंह जी परसों आए थे, उन्होंने बात की कि जवाहरात को एक स्टोरी टेलिंग की भी ज़रूरत है. मैं एक छोटी सी घटना का यहाँ जिक्र करना चाहूँगा. एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने एक शूज़ की बहुत बड़ी कंपनी है उनके पास जिसका वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. उनकी कंपनी ने एक शू बनाया जिसमें सिर्फ 500 शूज़ बनाए गए और शूज़ की जो नॉर्मल रेट मान लिया अगर $100 है, उनकी पर्टिकुलर शू की कीमत थी $500. पर उन्होंने बताया कि हमने जो बीज होता है वो कैसे पेड़ में लगाया, कब पेड़ ग्रो हुआ, उसको हमने कैसे कन्वर्ट किया शूज़ में, उसकी टोटल वीडियो बनाई जाती है और इंडिविजुअल वीडियो बनाई जाती है पर शू की. एंड दैट इज सोल्ड. सो दैट वाज स्टोरी टेलिंग स्टाइल. आई फील स्टोरी टेलिंग हैज़ बिकम टू बिग. और जो इनकी एडवर्टाइजिंग भी है उसमें स्टोरी टेलिंग इतनी स्टाइल से होती है, that makes a difference. So BG, they are big brand coming up in Jaipur. They are going to Bombay. They are already in Delhi, and their thrust area is storytelling. And now I invite Sunita ji for the question. The art of Meenakari is incredibly intricate and labor intensive. Can you tell us a little bit about how you have managed to preserve this ancient art? देखिए, एनामल जयपुर वॉज वन ऑफ द अमंग्स द 13 आर्ट सेंटर ऑफ एनामल. अब 13 में से अगर आज हम गिनते हैं तो ऑफकोर्स बीकानेर, बट आई थिंक जयपुर इज़ लीडिंग नाउ. वेदर वी टॉक ऑफ बनारस, जब हमने सबसे पहले पिंक एनामल शुरू किया था गुलाबी, दैट वाज डेफिनेटली फ्रॉम बनारस, बट हमने उसको गुलाबी शहर से जोड़ के पीपल थॉट इट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम जयपुर. तो अगेन जैसे आपने बोला कि स्टोरी टेलिंग भी ज़रूरी है और लोगों की याददाश्त भी. ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को आप हिस्ट्री से रिलेट करें ना. इंटरप्रिटेशन, री इंटरप्रिटेशन भी बहुत होता है. तो हमने गुलाबी के साथ अपना जयपुर का थोड़ा हरा रंग जोड़ दिया या पचरंगा जोड़ दिया, तो इट बिकेम स्टाइल ऑफ जयपुर. एंड टुडे पीपल एसोसिएट विद गुलाबी मीना बिकॉज ऑफ द गुलाबी शहर. सो इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट होते हैं. बट अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो डेफिनेटली जैसा कि तरंग ने बताया कि जब महाराजा जयसिंह ने, आई डोंट नो वेदर दे वर 50 आर्टिसंस और हाउ मैनी, बट स्टिल द क्राफ्ट ऑफ मीनाकारी इज स्टिल ओन्ड बाय द लोकल आर्टिसंस. 18 कैरेट में हम अभी भी कहते हैं कि बंगाल के कारीगर हैं, लेकिन मीनाकारी तो अभी भी हमारे सारे लोग अपने लोकल ही लोग कर रहे हैं जिन लोगों को उस समय से ट्रेनिंग मिली थी. सो अब सबसे जो डिफ़िकल्ट काम है आज की तारीख में वो है उन कारीगरों को टू मोटिवेट देम टू स्टिल वर्क अंडर द सेम पैरामीटर्स व्हाट वी यूज्ड टू डू इन द एंशिएंट टाइम. कुछ पैशन है, कुछ यू हैव टू कॉम्पनसेट देम विद टाइम. एक कारीगर है जो एक मंथ में हो सकता है 1 kg का काम करता हो, बट अगर इंट्रिकेट काम एनामल का है तो मुश्किल से 100-200 ग्राम का एक काम कर पाता है. तो आपको यू हैव टू कॉम्पनसेट देम, ट्रीट देम वेल, मोटिवेट देम. और जितना पैशन आप में है आप उतना ही अगर उनको पैशनेट रखते हो तो आई थिंक यू कैन अचीव. एंड एज यू सेड,
लेटर्स तो इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, 26 लेटर हैं. किसी ने लव लेटर लिखा है और किसी ने इतिहास लिखा है. तो अपने अपने इच्छा की बात है कि आप क्या उसमें से क्या निकाल के लेके आते हैं. तो मैंने तो आई डेफिनेटली वांट टू थैंक द सुराना फैमिलीज, द कांसलीवाल फैमिलीज, द आम्रपाली, ऑफ कोर्स यश माय डियर फ्रेंड. You guys have paved way for people like us to, trade smoothly. आप लोगों की वजह से आज हम लोग हैं. आप लोगों ने वो रास्ता बनाया तो हम उस रास्ते पे आराम से चल के पा रहे हैं. थैंक यू. सुनीता जी ने जो बात कही है उससे बात जाहिर है. शी इज ए न्यू एंट्रेंट इन दिस पर्टिकुलर लाइन. न्यू एंट्रेंट मीन माइट बी 20 years or so, but others have got a longer legacy. And now I invite Tarang to answer. Your collaboration with international celebrities and platforms have brought Jaipur into global conversation. How has this helped Jaipur break stereotypes about being just a heritage hub? So, Uncle, when we started doing a lot of things internationally, the most important part was that we were representing now not just Jaipur but India. We were on an international platform, and when someone would think that they would want a handcrafted piece, then they knew that they have to go to an Indian craftsman or an Indian brand, not go to a Chinese brand, not go to somewhere else. Now the monotony of the problem is that the monotony of the European look sometimes is the same, which is the Western. एक कारीगर इंटरनेशनली वाइट गोल्ड का कई बार पीस बनाएगा, या हम लोग जब GIA में सीख रहे थे, हमको सिखाते थे, तो हम इसको रिंग बनवाते थे, हम ही से रिंग डिज़ाइन कराते थे, उसमें हम ही डायमंड सेट करते थे, और उसी में तो एक आदमी का काम है. जयपुर के अंदर एंड जो इंटरनेशनली भी जो सेलिंग पॉइंट हमेशा रहा है बिटवीन द सेलिब्रिटीज एंड शोइंग देम दैट वी हैव मल्टीपल क्राफ्ट्समैन. एक कारीगर जड़ाई की ज्वेलरी नहीं बन सकती. इनामल अगर आंटी करती हैं तो उनको जड़ाई भी उतनी इंपॉर्टेंट है, उसमें स्टोन कटिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है, उसमें स्टोन भी उतने इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ वेयर द इम्पॉर्टेंस ऑफ जयपुर कम्स इन. हम वो जयपुर में ही अवेलेबल है, जयपुर ही उसको फॉस्टर कर पाया है, और वही हम इंटरनेशनली सेलिब्रिटीज़ को आप सेलिब्रिटीज़ बोल रहे हैं, बट इंटरनेशनल क्लाइंट हैज़ अप्रिशिएटेड दिस, सीन दिस. एंड आई थिंक अगर मैं आज JJS के शो में भी देखता हूँ, this year especially I've seen so many international buyers walking around. So all of these have results for what people are coming into Jaipur for. So how to maintain the authenticity of Jaipur art? How do you do it? So the next generation, the main problem today which we face while doing this is convincing the next generation to work into the business. हमने एक collaboration किया था मनीष अरोड़ा के साथ. उस collaboration के अंदर, because we were doing it for the first time, there was a designer who was thinking out of the box, gave us pieces, we started designing. We were the first ones at that time doing enameling on silver jewelry this is 13 years ago, 14 years ago. हम लोग को बहुत टाइम लगा, लास्ट मिनट तक काम चलता रहा जैसे होता ही है, एंड सामान शिप होने के लिए गया. द थिंग विच द कारीगर्स गॉट वेरी इम्प्रेस्ड एंड हैप्पी विद was us putting up a big screen, making them sit and watch the Paris Fashion Week where their jewelry was worn. उनका काम था जो Paris Fashion Week के अंदर French models पहन के रैम पे थी. That motivates them and that motivates the next generation कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो कहाँ पहुँच रहा है. Okay. ये motivation is very important to give to the कारीगर्स of Jaipur. I feel many are not following that style of teaching the artisans. That is very interesting. And now Anjuji is here. Your brand is known for celebrating Jaipur's craftsmanship through contemporary pieces. How do you ensure modern design still carry Jaipur's distinct cultural essence? So I think when I was a child or I was going around the shows, मुझे हमेशा एक कमी लगी that everybody who's doing जड़ाऊ or gemstone either is doing very minimalistic pieces जो यूरोप या अमेरिका एक्सपोर्ट हो रहे हैं, या कुछ लोग जो of course people sitting on the panel are doing beautiful artisanal big pieces. But when it comes to little, you want something to dress up your day, dress up your evenings,
तो वो एक मिड सेगमेंट ऑफ द ज्वेलरी जो मिसिंग था, आई थॉट दैट इज वेयर द breath lines, the more wearable to make you happy every day. That's what we tried to create, joyful colors to add to your everyday. So gemstones, keeping the हमारी jewelry जो लोग भी familiar है, we use a lot of gemstone carvings. So gemstone carving का जो art जयपुर में है, वो तो obviously there is no parallel to it. Keeping that, but keeping the modern woman, the changing lifestyles, the changing clothing of everyone. We try to create pieces for a lady who's from 16 to 45 to 50 years of age to enjoy it every day. I think that segment still has a lot of scope, and still a lot of people are not doing it. So that is where we fill Okay, in. Sunita ji has to add something. So मैं इसमें ना I would like to add something to this. जैसे जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन जो हमसे पूछते हैं हमेशा जर्नलिस्ट, वो ये पूछते हैं कि आप किस तरह की ज्वेलरी बनाते हैं. अब तरह ख़त्म हो गया, वैरायटी इज़ नो मोर. मुझसे किसी ने पूछा कि आजकल क्या चल रहा है, मैंने कहा आजकल कन्फ्यूजन चल रहा है. पीपल आर कन्फ्यूज, यू नो, कि हम जड़ाऊ करें, हम 18 कैरेट कलर्ड स्टोन. पहले डिवीजन क्या था, इधर इट वॉज जड़ाऊ और इट वॉज कलर्ड स्टोन, रूबी, एमरल्ड, सफायर एंड मे बी सेमी प्रेशियस स्टोन. अब ये है द ज्वेलरी की वैरायटी बहुत आ गई है. इट्स एवरीडे वेयर, ओकेजन वेयर, डे वेयर, नाइट वेयर, पार्टी वेयर, बट the client remains the same. Occasions have changed. This is what I have realized being into retail for 25 years. See, today if I'm sitting here, I want to wear a very simple piece of jewelry. But if I'm going out for a wedding, definitely I would want to wear a traditional outfit. If I'm going for a party, then of course the dressing will change, and so the jewelry. So जैसे जैसे अपने पहनावा बदला है, वैसे ही jewelry बदली है. पर्सन ऑलवेज रिमेन्स द सेम. पहले ये था कि अपने घर के सब जो भी मदर्स एंड यू नो ऑल द सिस्टर्स घर में रहती थी, एक ही तरह की ज्वेलरी पहनती थी. अब मुझे ऑफिस में जाना, आई नीड अ ऑफिस ज्वेलरी. इफ आई एम गोइंग फॉर अ पार्टी, आई वांट टू वेयर समथिंग डिफरेंट. सो दिस इज अ चेंज. सो इन अ वे, इफ यू लुक एट द पॉजिटिव साइड, एज अ रिटेलर वी नीड टू एड वैरायटी. Okay, the first 100%. round's takeaway message is very clear. The color is important and the jewelry is being made as per the occasion someone is going to attend. मैं समझता हूँ ये पहला राउंड पूरा हुआ, हमने सबसे एक एक बार सवाल कर लिया. एंड नाउ वी वुड लाइक टू लिटिल मोर इनफॉर्मल. और आप, मैं चाहूँगा कि आप अपने आराम से आप जवाब दें, क्योंकि आप यू हैव मेड ऑलरेडी द स्टेटमेंट अबाउट योर फर्म. एंड नाउ फर्स्ट क्वेश्चन टू चंदू जी इज, कुंदन एंड पोल्कीज आर सेंचुरी ओल्ड क्राफ्ट्स that define Jaipur's identity. I repeat, Kundan and Polki are centuries old craft that define Jaipur's identity. How does your family balance this legacy while evolving to meet modern bridal and luxury trends? So, as you mentioned that it is an old craft and it is basically all handmade. So, it is not easy to have things in the same pace which was done earlier, but our family has been encouraging artisans to do the best craft, taking them to the podium where they are recognized and they move on, and some of them have really become very recognized artisans from the President of India and likewise in different fraternity. More than that, it is so important that you encourage the artist to do a good job and pay him, as Sunita ji said earlier, that when we compensate with the kind of time he is taking, looking at the quality, guiding them for their good work. So these things keep the artist at ease, and the artist I am saying because I treat craftsmen also as an artisan at certain stage. And when it comes to having the modern bridal luxury trend balanced, we always take the input of the customer, what they want to be having and how they look at these things. So this whole evolution has been very continuous, has been more to that we try to create designs which are taken, the heavier versions of the earlier designs are taken to the lighter form. And as the different caratage of jewelry is also introduced in Kundan Meena, like 18 carat is used, I appreciate that, because otherwise we will be people will not be able to buy something is very expensive. So if you want to reach to them and face the other aspect of competition of the fusion jewelry
or confusion jewelry or creative jewelry, whatever we say. But it is all part, it is moving much more, larger production, feeding more people. Otherwise, something else will take their pocket. So the balance is important, and let's see how we keep on moving, making designs little lighter and more wearable for the younger generation and the brides. Would you like to add something about Buramal Rajmal Surana, the brand we have seen since rather 300 years or so? Would you like to add something on that? नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, सारी बातें सब जने कह रहे हैं, वो जर्नी हमने अपने बड़ों से सुनी है, देखी है, उनसे सीखा है। आज से करीब 40 साल पहले जब मैं कलकत्ता गया था, वो इसीलिए क्योंकि हमारी और शहरों में इस्टेब्लिशमेंट थी और कलकत्ता में नहीं थी, बहुत दूर था यहाँ से वो जाना। पर वो करने के बाद में ये लगा कि सब जने धीरे धीरे बाहर जाके काम करने के साथ में वो लोगों को जोश आ रहा है कि केवल जयपुर में कस्टमर आते हैं, उनको आप केवल माल बेचो, उसकी वजह उन तक भी पहुँचो, शोज़ में जाओ, शोज़ में पार्टिसिपेट करो और फिर अपने प्राइवेट क्लाइंटेल्स को फीड करो। एक टाइम था जब जनाना दौड़ी में जाना पड़ता था कवर के अंदर, फिर वो टाइम आ गया कि अब कस्टमर जब कॉल करता है तो लोग शो लेके पहुंच जाते हैं और शोज़ होते हैं सब जगह। तो प्राइवेट क्लाइंट डीलिंग से लेकर के ये शो का जो सारा जर्नी है वो सब भी देखा हुआ है। और जो मैंने आपको कहा, कारीगरों को एनकरेज करना, उन लोगों को उस लेवल पे ले जाना जो काम अच्छा हो सके और प्रिजर्व करना, एंड नॉट टू गो फॉर द मास काइंड ऑफ वर्क। दैट वाज द मेन इंटीग्रेशन, एंड वी हैव होल जनरेशन. Today I have elder generation of mine sitting there and my son who's sitting there. So I am here between the two generation, and I am feeling very, I mean, more than elation, it is a responsible act. क्योंकि गलती होती है तो वो पकड़ लेते हैं और कुछ नहीं करता हूँ तो वो यंगर जनरेशन डांटती है. Thank you. Now, शोज की बात की है और आपने जिक्र भी किया, शोज प्राइवेट शोज भी बहुत हो रहे हैं और कभी कभी लगता था आज से 5 साल पहले या 7 साल पहले कि शोज इतने ज़्यादा होने लगे हैं कि शोज कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे. बट लुकिंग एट JJS, you can, we are not here to publicize JJS, but we have got 1200 booths and a waiting list of 250 और 250 वो लोग हैं जिनको मालूम, जिसके अलावा भी मालूम है लोगों को कि हम अगर अपना नाम देंगे तो भी वेटिंग में ही रहना है, so they are not applying. Point is, shows have become so important in the gem and jewelry industry, and we have to go out and display our goods. And on that point, एक सेकेंड, मैं ये बोलना चाहता हूँ, शोज़ ज़्यादा हो रहे हैं पर वो क्वालिटी के नहीं हो रहे हैं जो JJS कर सकता है. जो आप JJS के ऑर्गेनाइजेशन के साथ में पर्सनल आप लोगों का पैशन जुड़ा हुआ है, उसके अंदर ये खूबी है. जो सब शो होते हैं उसमें ये सब बातें नहीं है. लॉट ऑफ शोज आर जस्ट डन फॉर कमर्शियल पर्पस और दे डोंट इवन लुक एट हु इज पार्टिसिपेटिंग. हियर you have to make an essence, you have selection, you have a process, you create facility, you create everything which a hospitality of Jaipur can offer, from quality to all aspect. I mean, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, because मैं भी अपने आप को JJS का पार्ट ही महसूस करता हूँ बहुत सारे कारणों से, और आज यहाँ बैठा हूँ तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील कर रहा हूँ. okay, Chandu ji, you are very much on YouTube and it is going to be relayed later on. Thank you for making things so easy for JJS. Now I ask Yes, you have showcased Jaipur's jewelry on global platform, including international fashion weeks. Why is global storytelling important in ensuring Jaipur stays relevant beyond India? This is not a repeat question, but I feel we are again emphasizing on storytelling. जब आप है ना कभी भी अपने आप को कहीं बाहर लेके जाते हो और किसी और के कंट्री में लेके जाते हो, सो एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए योर नैरेटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक यू हैव टू नैरेट दैट व्हाई यू आर हियर. और अगर वैसे भी देखा जाए, अगर ग्लोबली अगर स्टडी करें तो इधर देयर इज अ वेस्टर्न ज्वेलरी और देन देयर इज अ इंडियन ज्वेलरी. तो इंडिया इन अ कंट्री इटसेल्फ इज अ वास्ट स्टोरी टेलिंग सब्जेक्ट. और जयपुर पर्टिकुलरली हैज ऑलवेज बीन रेफर्ड एज अ रॉयल स्टेट ऑफ इंडिया. तो अगर यहाँ पे जो ज्वेलरी बनती है वो आराम से बनती है, एक तरीके से बनती है. उसके पीछे भी शुरू से ही अगर आप देखें तो मीनाकारी करी जाती थी. वो क्या है? एक स्टोरी टेलिंग का ही तरीका था कि किस तरीके से वो तराशा गया है, किस तरीके से उसको सजाया गया है. अदरवाइज रेस्ट एवरीथिंग इज अ कमोडिटी. गोल्ड की वैल्यू से बिकता है, डायमंड की वैल्यू से बिकता है. एक स्टोरी होती है जो आप उस पीस को बनाने में लगाते हो, वही एक आपका सिटी, स्टेट और कंट्री को रिप्रेजेंट करती है. दैट्स हाउ the global storytelling becomes very, very important as a subject, because what you are representing out is not only about your philosophy but about the entire culture
in which you are born and brought up, वो आप जब represent करते हो तो that becomes a storytelling for any of the platform. And that is why we are different from any of the Western people. Like, how are we different in very important way? कि जब कोई Italian designer present करता है या ये French designer present करता है, we are not able to differentiate too much out कि what kind of a jewelry it is. But when an Indian designer goes out on a platform where everybody says this motif is Indian, this is Indian. So that makes us different, and that's how the storytelling is most important. थैंक यू. मैं अपने वाइफ की किसी भी ड्रेस की जब तारीफ करता हूँ तो मुझे कम से कम 3 मिनट इस बात के लिए इंतजार करना पड़ता है कि शी इज़ गोइंग टू टेल मी हाउ शी हैज़ बॉट इट एंड वॉट हु वॉज अराउंड, और हमने कैसे ना किया, मैंने ये कलर देखा था और फाइनली ये लिया. तो पॉइंट इज स्टोरी टेलिंग. स्टोरी टेलिंग इज एवरीवेयर सो इम्पॉर्टेंट. दैट इज 10,000 रुपीज साड़ी और वी आर टॉकिंग ऑफ 10 lakh रुपीज ज्वेलरी. Everywhere story are become so important. And now I come to Sunita ji. What innovation you introduced within Meenakari to make it relevant in world where minimalism often dominate design preferences? And since we have got another round, I request you to be little short. We have got almost 55 minutes we were given, so I request you to be short but quick. देखिए, रेलिवेंस के लिए when you talk of design, what is design? Either it's a color or technique or a pattern for me. अब उसको मिनिमाइज करने के लिए मुझे लगता है इंस्टेड ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी वी कैन ईदर रिड्यूस द डायमेंशन ऑफ द पीस बट द एसेंस हैज़ टू बी सेम. आप पहले जो बिल्ट भी लोगों की बड़ी होती थी, लेडीज़ भी 5 feet 6 feet, you know. So with the height, with the personality, with the kind of outfit that the designers are making, मुझे लगता है हमने उसको मिनिमाइज किया है. मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों ही किया. डिपेंड्स अपॉन, अगेन इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली, choice of the person, and as designer we always feel that we have to cater to the person's choice, not like I don't think I'm that important. The client who's buying is very important, but at the same time you have to retain the essence of the brand. And I always say that there are 9 planets but sun is stationary, so let the 9 planets revolve around the sun. अगर सन भी घूमने लगा तो सोचिए आप क्या होगा सृष्टि का. सो मुझे लगता है आई ऑलवेज कीप, this is what we do. If you like, of course we'll go to a certain extent to, you know, suit your choices, but then sun is stationary. So the brand Sunita Shekhawat is stationary. Let the 9 planets revolve around the brand. Okay, that's a great selling point. Thank you, Sunita ji. Now Tarang again. Amrapali has created a niche for blending modern aesthetics with traditional techniques. How do you maintain authenticity while staying edgy and bold in your designs? I think for us, the most important thing is that I don't see any other brand doing this, any other jewelry house doing this. We are one of the few ones which create fashion jewelry, which create silver jewelry, which create fine jewelry. I think because we have so much play at our work that we try different techniques, different textures, different ideas in all the systems, and that's how we are able to blend the modernity with the authentic craftsmanship. I think that gives us the R&D which we need, and I think that's how we do it. Okay, you are into not only gold, you are into other metals also. Ji. How do you say about it? Which Fashion jewelry, uncle, brass, and we export that. That's primarily a white label business which we have, which is, we are the highest exporters out of country for the 12th year this year. Okay. So that is a completely different part of the business which the world does not know about Amrapali. But that gives us that edge to be able to regularly be experimental. That gives us that edge to know what the international market is going to sell 6 months from now. Okay. I have that information. So now that information can be used in the local business. And the infrastructure has been created by my father, my uncle, enabled us to do these experiments throughout these different levels and then understand which can be finally taken to the fine jewelry segment. So you got updated information rather before 6 months for most of the jewelry, or you are talking of brass and other things? Everything. Everything. Colors, stones which are going to be important internationally, the metals which are going to be working. Of course, they are also
thinking about what gold going to be, and because of those gold prices, will a silver product sell more, and what silver price is going to So- be because of which a brass product is going to sell more. So that kind of foreseeingness is there in the international market, which we. So can you tell the audience what is going to be popular after 6 months? No, I think we all know the color is mocha. It's the browns are going to be in. I personally feel tourmaline is going to be the next bigger stone. So I think it's the least. There's no treatment. It's a natural color, and the mocha color we're looking at, or the international market is going to look at. We're going to get that from tourmalines. We're going to get that from pearls primarily. Okay, thank you thank you for updating. And now Anjuji, she everyone else is into Kundan Meena jewelry, but she is into fine jewelry. The role of a women-led jewelry business has grown significantly in Jaipur. How does your vision as a women entrepreneur shape Jaipur's evolving jewelry landscape? So I think me sitting on the dais itself says a lot. We are first generation. We started about 18 years ago. The industry, I think, is very supportive, and the environment is very cohesive for the women. In Jaipur, everybody knows everybody. And everybody जो अच्छा काम कर रहा है, उसकी इज्जत, उसका respect और उसकी help करने को पूरी industry तैयार है. Whether you are talking about gemstones, whether you are taking off commissioning a piece to a particular factory, because जब काम शुरू किया था तो सब कुछ तो setup नहीं था. So when we started, it was a very, very small setup. But thanks to a lot of people in Jaipur and a lot of important names sitting here as well, that pura environment, not only women-led entrepreneurs, I think the new generation, not the women, the men, we are all seeing about second or third generation sitting here. सब पढ़ने के लिए बाहर गए, सब ने jobs की, but the Jaipur fraternity brings them back because they see the closeness and the scope that there is so much growth here. So I think there is the environment is very, very positive, and thanks everyone, the whole industry for all the support. On that point, what is your take on Middle East area where you are working at? Ji, so we've been active in the Gulf. We've been working in that market for around 15 years. वो market is a very typical market to crack क्योंकि वहाँ एक privileged customer बैठा है. उसको कार्टियर से लेके बुशरॉन से लेके डेविड वेब से लेके मतलब इंडियन डिजाइनर इज ऑनेस्टली द जो साइड के बूथ होते हैं ना वो वहाँ होते हैं एंड दे कम देयर टू बाय द गिफ्ट्स द चीपर चेयरफुल स्टफ दिस वाज द इम्प्रेशन 15 years ago when we started. So हर मार्केट में जगह बनाने के लिए अब एक वक्त लगता है. आपका प्रोडक्ट, आपकी क्वालिटी, द आर्ट ऑफ डिटेलिंग, द योर क्लास्पिंग कैसे पलट रहा है, कपड़े पे छू रहा है कि नहीं, बिकॉज आप जिनको केटर कर रहे हैं वो बेस्ट ब्रांड्स की बेस्ट चीज़ों में ऑलरेडी रह रहे हैं. सो टू मेंटेन दैट क्वालिटी, टू मेंटेन दैट स्टेट ऑफ आर्ट डिज़ाइन, येट आई थिंक आर USP इज टू मेक द ज्वेलरी वेरेबल. सो इट्स ज्वेलरी इज टू एंजॉय एवरी डे. आई थिंक इट्स नॉट टू बी जस्ट टू केप्ट इन द लॉकर्स. सो दैट आई थिंक इज आर USP की जो भी ज्वेलरी हम बनाते हैं, दैट्स इफ यू बाय इट टुडे यू वेयर इट टुडे इवनिंग फॉर. So I think that part really helps. Gulf में एक डिज़ाइन की और एक्सक्लूसिविटी की बहुत वैल्यू है क्योंकि जिसने एक जने ने पहना है वो नहीं चाहता कि पूरे क्राउड में दूसरे के पास वैसा पीस हो. Okay. So customizing and custom designing is something which is very important. We work very closely with a few important families जो चाहते हैं कि हमारे important stones हैं या आप हमें options दें 1, 2, 3, उसके हिसाब से हम उनको भी टेक देम थ्रू द प्रोसेस हाउ योर पीस इज बीइंग डिजाइन. ये घाट आया है, नाउ डू यू चूज टू यूज दीज, डू यू चूज टू यूज दीज बीट्स. सो दैट गिव्स देम अ वेरी पर्सनल टच. वो लगता है ये पीस सिर्फ मेरा है. दे हैव ओनरशिप टू दैट डिजाइन. On that point, when you say it is personalized jewelry you are making for customer, how do they compare with the established brands? Like they cannot say about your product that it is from Tiffany or somewhere else. No, times are changing, Ajay ji. They are very proud to have a Amrapali or a BG or a Nafis piece with them. So times are changing, and यही खास बात है कि अब ये हांगकांग की फैक्ट पीपल आर नॉट लुकिंग एट दोज थिंग्स, स्पेशली इन दैट मार्केट. उनको कुछ अलग यूनिक और अपना चाहिए जो that there's no other for that piece. So you have to create your own brand.
And now, Sunita ji again. What role does Jaipur's architecture with its arches, wall paintings, murals, and vibrant hues play in your creative process? कि जब भी लोग इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं ओके आई डोंट थिंक यू हैव टू ट्रैवल 10,000 माइल टू लुक फॉर एनी इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन कभी तो रात को भी आ जाती है जब आप देर से सो के उठते हो, या कभी वाइल टॉकिंग ऑल्सो. आई वॉज लुकिंग एट चंदू जी स्ट्राइप्स ऑल्सो, सच अ ब्यूटिफुल ब्लैक विद ग्रे और वाइट. सो वाई कांट वी यूज ज्योमेट्री विद फ्लोरल. सो मुझे नहीं लगता ये बड़ा ना लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन को वो हिंदी फिल्में देख देख के कि वो आप कहीं कश्मीर में जाके ही सिर्फ एक ऑयल पेंटिंग कर रहे हो. आई डोंट थिंक सो. वो अब हमारे वाले लोगों पे अप्लाई नहीं होती है. मुझे इंस्पिरेशन कभी भी कहीं पर भी आती है, बट ऑफ कोर्स हिस्ट्री हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट part in my learning because I was a student of history, modern India also. पर अब तो Indian history भी अलग तरीके से लिखी जा रही है. I was with Diya Vaisa for this Vikram Sampat's book launch. तो अब समझ में नहीं आता कि हमने जो मुगल हिस्ट्री पढ़ी थी वो सही है या जो आज बता रहे हैं वो सही है. So whatever all said and done, history has always played an History is important. written by the winners. That is the yes. phrase. Yeah. So inspiration तो बहुत तरह से आती है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि इंस्पिरेशन कभी भी कहीं भी किसी भी फॉर्म में आती. लुक एट दोज बैनर्स, सच ब्यूटिफुल शेड्स ऑफ 3 greens. कहीं से भी आई मीन it comes naturally. You don't even realize. I saw subconscious mind में I कभी saw भी a होती है. jewelry which was made of with the design of jalebi. So he copied that. Can I add something to it, Ajay ji? Yeah, please. जैसे इंस्पिरेशन की आपने बात की, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ग्रोइंग अप, व्हाट वी सी, व्हाट वी डू, व्हाट वी एक्सपीरियंस, हाउ वी सी थिंग्स मिक्सिंग, हाउ वी सी कलर्स मिक्सिंग, ऑल दैट impacts your subconscious. And I think when you sit to mix your colors, and it's also a mood, I feel कि कभी एक feeling होती है उसकी, that is how you want to create certain things. So I think a lot of things what you've seen up growing. So the impression we have got become the creativity. Now Chanduji again, the final question to him is, in an age where quick turnaround is key, Kundan and Polki require time and patience. How do you educate clients, especially younger buyers, about the value of slow handcrafted luxury? To be very frank, they are people who want to have something as a treasure or want to pass on ahead. We have to just let them understand whether this thing what you're going to have is not something very, very special, very classy, or it is not something which cannot be done again, which happens in the handcrafted jewelry. And if you want to keep it for your next generations pass on, a lot of Indian families have already possessed, but there are new generation buyers who want to learn about this difference. Now, it's very difficult to hear from any Indian clientele asking for Burmese rubies or Basra pearls or something which we did some 50 years back or 35 years back. It has all moved to much, much faster production and different things. So distinguishing and showing them something which we have nicer, more classier than what they see otherwise, and define them the importance of quality is the aspect which every customer understands. And if they want to possess something for longer term as investment, because now jewelry is not just investment, it is also design, the creation, the variety. So all these things are explained, and we personally believe in doing that consistent job, which people, even they buy a small thing from us, should become their prized possession and passed on for generation, a timeless treasure. That's what we assess our jewelry as, timeless. So Chanduji has made a statement that jewelry is no longer for investment. Not only investment. If you want to invest in jewelry, buy good piece, good quality, good workmanship, good piece of art. Okay. Yes, ji. Birdi has become aspirational for younger luxury buyers. What are you doing to redefine Jaipur's heritage, the tech-savvy generation and social media generation, while still sticking to your brand and Jaipur's legacy? Actually, this story
I will have to tell. This story starts from back. In 1995, I traveled to the Hong Kong for the first time, and I went for Hong Kong jewelry show. Now, as a belonging to a jewelry family, I was a very young child. I wanted to see all the jewelry designers out there. Very famous big booths. हमने इंडिया में कभी इतनी बड़ी बूथ देखी भी नहीं थी, और जितनी बड़ी बड़ी वहाँ पे बूथें लगी थी. तो the moment I used to go to those booths, they used to keep their brochures inside. मतलब वो उठा के ब्रोशर अंदर रख देते थे. That thing really pinched me. That day I said कि, you know, India should not be the factory to the world. We should be the designers to the world. And that's what I started working on, and I started creating my brand towards that. I want to be a luxury house. We need to tell the story to the younger people, make them have aesthetics, aware about our own culture more than what they are falling in love with. So आज की जो younger generation है ना, they all have started loving the Western culture so much that their dress, their aesthetics have all changed. एक बड़े मजे की बात है, जब हम लोग 12th से पास आउट हुए थे, गैप वॉज अ वेरी पॉपुलर ब्रांड आउट ओवर हियर इंडिया. तो एक आंटी मेरे एक फ्रेंड की उसके लिए स्वेट शर्ट लेकर आई गैप की, विच ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ. तो अंदर देखा मेड इन इंडिया, बट ही वॉज प्राउड क्योंकि वो अमेरिका से लेकर आई थी, क्योंकि इंडिया में नहीं बना हुआ था इसलिए नहीं थी. सो आई थॉट दैट स्टोरी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी आर द वंस हु वीव, वी आर द वंस हु क्रिएट. So now the kids are really learning, and the social media is playing a very, very important role into it. It's just expressing. It's an easy way of expressing your style very around your consumer community. So, what is the message to the younger generation you want to give, who are totally dependent on social media, particularly Insta, and they are picking up the jewelry designs from there? So, are you making jewelry for them also, or you are still for bridal big ones? You know, I mean, so that's a very that's a thing. I don't make jewelry for anyone. I make jewelry to please myself. Oh. I'm a designer for myself. If I like, I make. I don't make it for anyone. So, I mean, people get inspired from Instagram, social media, but it's inspiration. Don't make it a trend out over there. Trend is what you create. What you wear is a trend. So, the young generation से कह रहे हमने वो bride देखी थी, उसके ऊपर ये piece बहुत अच्छा लग रहा था. But that's not actually a true thing. Bride के ऊपर अच्छा लग रहा था, आपके ऊपर अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा ये पता नहीं. So it's you who creates the trend. It's not the Instagram who creates. Okay, she cannot be bride again. That is the issue. No, she can be bride, but a different piece will look nice on her. Okay, Sarang. As a young entrepreneur, you are leading Amrapali into a digital first luxury market. How do you see Jaipur adapting to trends like e-commerce and virtual jewelry buying? So I think, Uncle, both, not just buying, but even preparing the infrastructure. Few years back, none was there, and I myself was of that mindset. When Akanksha, my wife, started Tribe, my father and uncle really supported her. I was the one who said that it's not going to work. No one's going to buy jewelry online. No one buys jewelry online. This was in 2013. Today, in our segment, we are putting the most effort and growth towards that brand. If Amrapali has a philosophy of जिसको अभी यूजर जनरेटेड कंटेंट बोला जाता है UGC, वो तो हम मेरे डैड 40 साल से कर रहे हैं, बिकॉज हम कभी एड्स देते ही नहीं थे, आज तक ही एड्स नहीं दिए. सो इट वाज ऑलवेज यूजर जनरेटेड कंटेंट, जो किसी ने पहना वो दूसरे को बताया, देखा, दैट वाज माउथ पब्लिसिटी वाज देयर. That is exactly what we are doing opposite in Tribe. Whatever the ethos of Amrapali was in terms of marketing, we're doing something else in Tribe. We're doing digital marketing. We believe that 5 years back, 6 years back, Jaipur lacked that infrastructure to support that. Today, both in terms of buying, you can see this in offline stores. You can see this in the way the city has grown, the areas of cities which has grown, the shopping which has grown, the desire after COVID, the desire to not just save for the next generation or for the future, but also spend today. What Uncle had said that time, it's not only investment. What he meant was that today jewelry is worn as a fashion to please yourself. It came late to Jaipur versus a Delhi or a Bombay or a Bangalore, but it has arrived in Jaipur, and we have both the infrastructure and the buying capacity of online and easily pickable jewelry today.
So COVID has done something good to gem and jewelry industry. I think so. I think so. It has rewired all of us, not just in jewelry industry, as a society which is now becoming a spending society versus just a saving society. And we can see this in the last 5 years. In automobile sector, we can see this in houses, we can see this in everywhere, in clothing, everywhere. A mindset of my dad to go and spend the amount of money on a suit versus 10 years back to today is completely different. The spending habits have changed and that is impacting gem and jewelry industry as well. Exactly. Anjuji, the last question, then we will take the audience question. Your fine jewelry works with Jaipur's artisans to deliver exceptional quality. How do you collaborate with local talent to bring innovation without compromising on heritage? So I have to tell you a little background about this. I had studied fashion. I had never studied jewelry. When I got married, my husband, he has a gemstone cutting business. And we used to cut gems for bigger brands like David Yurman, Parmalatho. So when I used to see these beautiful stones, and part of my life, I've been in Hong Kong and I've done my GIA there. So international exposure था, तो मुझे लगता है इतनी खूबसूरत stones, and in India we are not using from rose quartz to London BT to amethyst. They were rutilated quartz. I'm talking about 20 years back. So that quality, what an Indian stone manufacturer could give to those designers, which was also very rare at that time, that inspired me to start a jewelry line of their own. And still to date, quality is what we maintain, whether it's in gemstones or in our jewelry, and that every piece at Exquisite is designed in-house completely from scratch. Stone is cut to perfection. And I think a lot of facilities in Jaipur are the only ones which can boast that. Otherwise, international designers are always looking for vendors either in Jaipur or Bangkok or China for the stone sourcing for custom cutting. So I think quality reigns supreme. Okay, thank you so much. And now the final question to everyone, that is a common question to everyone. One thing Jaipur offers to the world of jewelry that no other city can. Tarang, please. I think, Uncle, what we have done in diamond industry, with, again, Navratna Uncle is here, what has been done from getting diamond cutting to India on such a large level, I think that is what Jaipur needs to do in the colored stone sector. We are 70% of the producers of emerald in the world, 30% producer in value-wise, 70% quantity-wise. Why are we letting go of the business to Bangkok when it comes to rubies? Why are we not doing this? Why, when we have the cutters here, when we have the infrastructure here, we have to become important for colored stones, no matter what, in other sections also. So that, I feel, is the next path for Jaipur, for the coming Jaipur to be successful. Okay. Now, Yash. Well, I think Jaipur offers the craft which no other city in the world can offer. It's craftsmanship, and it's detail for design and royalty, which no other city in the world can offer. Okay, that's wonderful. Yeah. Chandu Babu. मैं ये कहना चाहूँगा कि हम 5 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पर हमारे पीछे उस सारी जो एक प्रोसेस की टीम है, चाहे वो कटर हो, चाहे वो पॉलिशर हो, चाहे वो ज्वेलरी मेकर हो, उस सब का एक रिप्रेजेंटेशन है. और जयपुर में वो सब चीज़ की एक खूबी है. मुझे याद भी नहीं क्या बोला है. आपने बोला था गंगा जमुना सरस्वती और सबको बहुत ढंग से सुनाई दिया है, मैं समझ रहा हूँ. अंजू जी प्लीज, योर टर्न. सो अगेन जयपुर, जैसे सबने मेंशन किया, आई थिंक इट्स अ मेल्टिंग पॉट. क्राफ्ट से लेके आर्टिजन से लेके द पीपल्स एंटरप्राइज, people from generations are traveling abroad. They are bringing buyers. They are collaborating with overseas designers. So they are very open to work globally. That's why Jaipur is becoming a big global hub. The kind of customized gemstones, the kind of detailed artistry, and the craftsmen. I think ये तीनों चीजें जब मिलती हैं, जैसे चंदू भाई ने बोला गंगा जमुना सरस्वती, it creates an ideal environment for business. And soon I think there's no stopping. There's scope of plenty and more to grow. So I think each one of us should be looking forward to more businesses. सुनीता जी. देखिए, मेरे लिए Jaipur offers is 3 C's. It's color, craft and creativity. So अभी I was in Udaipur, Tarang, and I was talking कि जब हम राजस्थान की जब बात करते हैं तो
आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, तो वो हिस्ट्री तो उदयपुर में भी थी, वो हिस्ट्री जोधपुर में भी थी, वो बीकानेर में भी थी और शहरों में भी थी. तो जयपुर में ही ऐसी क्या खास बात है? एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बीइंग अ जूलर. लेट मी मेंशन नेम ऑफ जयपुर राग्स, जो गोलेचा दैट गर्ल is doing, Priyambada is doing such a beautiful work, the glass bangles of Jaipur. So Jaipur, कुछ तो खासियत है जयपुर में कि ये ब्रांड सारे जयपुर से ही क्यों बने, एंड व्हाई नॉट फ्रॉम जोधपुर. एंड एज फार एज आई रिमेंबर, अगर हम जोधपुर की बात करते हैं, ऑफ कोर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट टू राघवेंद्र राठौड़, अदर देन राघवेंद्र राठौड़, कैन यू इवन मेंशन वन सिंगल ब्रांड? भाई तो कुछ तो है, कुछ बात तो है. क्रेडिट जेजेएस को भी जाता है, पुराने लोगों को भी जाता है, हमें भी जाता है, सबको जाता है. एंड देयर इज वे फॉरवर्ड. एंड फॉर द न्यूअर जनरेशन, सबसे ज़्यादा जो इन लोगों को किल किया है, वो किल किया है पिंटरेस्ट ने. हम लोगों ने उस ज़माने में ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की थी जब इंस्पिरेशन नाम का आंख बंद करके सोचना पड़ता था कि क्या करना है, और अब उनको कहते हैं कि प्लीज़ क्लोज योर आईज, शट योर विंडोज़. So that is the most challenging part in today's generation. Okay, you mentioned 3 C's, which is the specialty of Jaipur, and you are not happy with the Pinterest and so many social media things, which has rather killed the creativity which we used to have. And now we can take 3 questions. Navalji, if time permits, can we take 2 or 3 questions from my audience? Yeah, please. And final, we would यहाँ like से to ले लो have mic. comment from Rajiv ji as well as Kothari sahab also about Jaipur. Yeah, please, Mamraj ji. 3 questions. We don't have much time. Another session is to start, so we have to wind up. मैं तो एक मीनाकार रहा हूँ, पिताजी से नेमीचंद जी का बच्चा हूँ. तिजारा मेरा गांव है, और वाजिद अली शाह से स्टार्ट होता है, उसके बाद अकबर, उसके बाद मंगोल से कुछ कलाएं आती, और जयपुर तो समझ लीजिए क्या बात है जयपुर की. और मीनाकारी में अब सबसे बड़ा दुख यह है कि इतनी स्टाइल है और देसी मीने की 5 लोगों के पास चीज नहीं है. मैं कहता हूं कि आपको देसी मीना बचाना चाहिए, बस ये मेरा आपसे विनती है. I think this is for all of you. And suggestion as that, we do Jaipur Jewelry Design Festival to actually basically promote other design techniques and other materials. So if any one of you had to design a piece of jewelry that tells a story, and you had to do it without using gemstones, what material and what resources would you use? Without gemstones. Without gemstones. Many have not taken it lightly. Yeah. I think What? multiple metals are out there. As I was talking before, that we use multiple metals. I think that is a great thing. Now different finish those metals are the key. Different textures on the metals are the key. Enameling is an outstanding form to do that. So I think it definitely can be done. Gemstones enhance the beauty. Gemstones enhance the value of the piece. Gemstones enhances the intrinsic value in the future also, what someone has invested into it. Right? The metal value is going to always be a metal value, more to begin with. Gemstones is where you got a Colombian emerald 10 years ago, and today what it is valued at. Right? Stone में जो metal में appreciation हुआ, तो commodity appreciation हुआ है. Craftsman का आप थोड़ा सा उसमें add कर सकते. So I think gemstone is important, but this is what can be done. So Sujata, your idea is not taken back. Well. तो थोड़ा पॉजिटिविटी लेना चाहिए. सॉरी. Exactly, I was adding the same thing. The mines to market की जो story gemstone के पास होती है, वो किसी के पास नहीं होती. मैं मामराज जी के क्वेश्चन का भी एक आंसर देना चाह रहा था. इस बात को थोड़ा पॉजिटिवली लें कि अदर देन द मेटल ओरिएंटेशन जो दूसरे आप बता रहे हो यूज़ करने के, चाहे वुड हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे सीमेंट हो, उसमें जेमस्टोन को कैसे एम्बिड करके कर सकते हैं या कैसे क्रिएटिविटी डाल सकते हैं. मीने की बॉल्स के अंदर आप रबड़ का बैंड लगाएं या लकड़ी के ऊपर कोई और चीज़ लगाएं. इस तरह की प्रेशियसनेस करेंगे तो आप अपने स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ के लिए गाइड करें यहाँ पर, और उनको इंस्पायर करें कि बिल्कुल वो करें. उनको ऑल्टरनेटिव ज़्यादा मत बताइए. मामराज जी ने बोला ना कि देसी मीना को बचाना चाहिए. हाँ. मेरे ख्याल से केवल देसी मीना कोई नहीं, मैं इतनी सारी बूथ्स पे घूमा, हम कुंदन मीना की तो बात करते हैं, ना तो मुझे कुंदन दिखा ना मुझे मीना दिखा, सिर्फ पोल्की एज अ कमोडिटी दिखी, which is nowadays called as open setting. So where there is no art left into it, so we have to save this entire art. So
Yeah, Navalji, please. My question is with Sunita ji. Sunita ji. Thank you very much for coming on this esteemed panel. You have been also known as Queen of Meenakari, modern Queen of Meenakari. Okay. You have mentioned that pink color you associated with Jaipur, Ji. but to me, It's Banaras. Jaipur's red is famous. Yes. Jaipur So- Pachranga also. No, not Pachranga. Jaipur is, as far the Meenakari is concerned, it is Jaipur red, Ji. which gives the very brilliant red color, Yes. and that represent to the sun, or you can say ruby. Bilkul. So that's the main color of Jaipur. Ji. Basically, what is happening, we are doing so big businesses over here in the Meenakari and Kundan and all these things. Unfortunately, we are not adopting the modern techniques, and we are not even documenting our art and culture. Yes. So why this Meena, red Meena, is vanishing from Jaipur? The basic reason is we don't know the exact temperature Yes. on which this has to be heated. Yes. So these things has to be documented, so the next generation who come to the state, they can do all these things. See, just example, our ancestors who were doing Kundankari, they were knowing that Dhokka Kola is having the perfect temperature. So when the Kundan is heated with this koila, right temperature will come and Kundan will come very Yes. in a good shape. So these are the things. What is the temperature? What is the melting point of the Yes. amalgamation? And So in they fact, are- the alloy also, the alloy, Yeah, the ratio of the alloy metallurgy- also makes so all the metallurgy, documentation of Meenakari, documentation of craft is very important. Yes. And since you have the museum also, Yes. so all these things kindly try to document, Of so course. that our next generation can Definitely, get the definitely. advantage of all these Of techniques. course, I'll take your advice. And in fact, I'm going to invite all of you to come and visit the museum. We have documented the entire process. So there's this Sarpech, which was from the Nizams, and Houston Museum of Fine Arts, they acquired. So when we opened the museum, although I should not call it a museum, it's like a gallery only. So when Mr. Trinto, he's the director of Houston Museum of Fine Arts. So fortunately, he visited the store, and we just got the copy, like a photocopy of a piece to replicate. And we were able to achieve, जैसा अभी आपने बताया, 98% of gold purity you need for a desi meena to be done. 98. And red color is, आपने जैसे बोला, is most difficult to achieve. सबसे difficulty red की brilliance आ रही होती है. तो when Mr. Trinto came, he said, Sunita, let me congratulate all the artisans of Jaipur. You have not gone wrong anywhere to replicate that piece. And I've got a letter from him signed. Okay, thank you so much and thank you Naval ji for updating the audience. और आपने जो बातें बताई है, I would like to any comment from Rajiv ji or Kothari साहब about Jaipur. The final comments about Jaipur if you want to make. नहीं, जयपुर के बारे में क्या बोले? जयपुर तो शहर ही नगीना है. हम लोग भाग्यशाली हैं. यहीं जन्मे, यहीं पढ़े, यहीं बड़े हुए और जयपुर की खूबियां जन्म से लेकर आज तक देखते आ रहे हैं. लेकिन आप लोगों को सबको सुनने के बाद में मुझे लगा कि ये जो वक्त आ रहा है, जो आने वाला ये डिकेड है, इसमें कलर स्टोन को बहुत बूस्ट मिलेगा. क्यों? हीरे के अंदर ये लैब ग्रोन इतने रंगे तैयार हो गए हैं कि लोगों का कॉन्फिडेंस कम होने लगा है. हालांकि हीरा हीरा ही रहेगा और लैब ग्रोन ही रहेगा, लेकिन जयपुर के लिए स्वर्णिम समय है कि ये कलर स्टोन के बिजनेस को खूब मजबूती से आगे बढ़ाया जाए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ाया जाए. ये स्वर्णिम डिकेड रहेगा कलर जेमस्टोन्स के लिए, ऐसी मेरी सोच है. And finally we close the session.